This segment of Live Wire is brought to you by First Capital Equities Limited. वेलकम टू सेक्टर एनालिसिस। मैं हूं फुरकान अयूब और मेरे साथ सैफान खान मौजूद हैं। हम इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। ऑब्वियसली पिछले वीकेंड को सैटरडे को बजट अनाउंस हुआ और कोई ख़ास सरप्राइजेस तो नहीं आए, लेकिन इस बजट को मज़ीद एनालाइज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा पाशा, इकोनॉमिस्ट हैं एट BMA। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मुस्तफ़ा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली जो मेन नंबर्स हैं और जो ग्रोथ के हवाले से पहले बात करते हैं। फर्स्टली अगर आप बताएं कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द बजट? डिड यू थिंक कि एक एक्सपेंशनरी मोड में जा रहे हैं फिस्कल साइड से, या यू स्टिल थिंक एक स्टेबलाइजेशन इज़ द प्रायोरिटी? I think abhi jo as far as the main budget goes, there weren't many surprises. I mean, there was a lot of speculation leading up to the budget in the media and in the market कि क्या होगा क्या नहीं होगा. So I think कोई as such not the negative या कोई positive surprises budget में नहीं दिए. The one thing we have to see that जो main targets दिए, they've said that 2.2 trillion rupees का they have a revenue target. उसमें से 1.4 trillion tax revenue. The other thing is that 2.9 trillion का total outlay, so they're projecting a total deficit of in excess of 700 billion rupees or 4.9% of GDP. इस साल like जो outgoing fiscal year है उसके अंदर हम लोग project कर around 4.5% fiscal deficit रहेगा, which is pretty much in line जो हम लोग का target था 4.3% का. So what we're seeing is that जो हम लोग को जो pledges आए हैं internationally, we saw the FODP conference give us $5.3 billion for the next 2 years. You've seen कि IDB के लिए pledges आए about 48 billion rupees from the international community. So what the government is basically, they have a very fine balance जिन्होंने अपने बजट में दिया. In fact, it's अगर आप हम लोग उसका एनालाइज करें, it's a very optimistic budget in that you have very little room or very little margin for error. अगर आपकी रेवेन्यू कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, अगर आपको प्लेजेस मटेरियलाइज नहीं होते, तो इट विल कॉम्प्रोमाइज द होल फिस्कल स्पेंडिंग प्रोग्राम जो आपने किया है. हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को उन्होंने 3.3% का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया था, दैट वाज एक्सपेंडेड फर्स्ट टू 4.6% एंड देन फ्रॉम 4.6% टू 5%. However, जो बाद में इन्होंने जो एक्सपेंशन दी थी 0.4% की, that they said that is only conditional on receiving funding. You cannot use local borrowing or any sort of borrowing to finance that additional deficit. तो अगर आप जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जिन्होंने स्पीच करी थी बजट की, इन्होंने कहा था कि बेसिकली जो रियल फिस्कल डेफिसिट है, दैट्स नॉट 4.9%, दैट्स 3.4%. एंड व्हाई इज दैट? इसलिए जो 1.5% जो एडिशनल हम फिस्कल डेफिसिट रन करेंगे, दैट विल बी विद द असिस्टेंस of international pledges. The government is budgeting that this year they will receive around 180 billion rupees from international pledges plus 48 billion rupees for FDP. So that's approximately 230 billion rupees जो external sources से financing आएगी deficit की. Right. So let's go with the growth first. In terms of जो growth का target है 3.3%. Do you think that's optimistic, या आप उसको cautiously optimistic कहेंगे, या very unrealistic? No, I wouldn't say it's unrealistic. Pakistan, if we traditionally look at Pakistan's economic growth, fast recovery is the norm. However, that will always be contingent कि आपकी जो external environment है वो थोड़ा सा benign रहे. अगर oil prices are going up to $100-120 a barrel back in the next 6-7 months, then obviously 3.3% will be a bit of a problem. अगर हम individual sectors के targets देख लें, this year agriculture is going to go by 4.7%. Why? Because we had आपका 23.3 million tons का, you had a surplus. Rice, आपका जो record crop था 7 million tons का. So agriculture saw a lot of growth. Next year they're projecting 3.8%. Now the budget has a very agri focus on it, obviously given the importance of agriculture. So it wouldn't be unrealistic to say that once the government actually implements some of these policies, especially I think abhi support prices ki, I think your government one of the most effective ways to mobilize agricultural growth is to announce support prices. हमने in fact देखा था previously कि जब wheat के लिए 950 रुपए per mon उन्होंने जो announce करी थी, तो wheat हमारा surplus आ गया in fact. So I think the 3.3% target isn't unrealistic given कि your international commodity prices stay in line. At $70 a barrel, you're still fine. It's the stability वहीं है.
तो एक तो आपका fiscal stimulus है, you have the 626 billion PPSDP program. The majority of that is, well, 50% goes to infrastructure. You're concentrating on basically, overcoming your power deficit. They've set up a holding company के जी जो banking sector के loan obligations हैं 220 billion रुपए के, वो government responsibility ले रही है, जो उसके ऊपर financial charges जो build up होते हैं उसकी भी हम responsibility लेंगे, जो 80 billion फाटा का जो outstanding bill है वो हम दे देंगे, तो जो पेप्को की जो भी मसले हैं recoverables and payables उसके अंदर we will actively assist them. So the government, it seems, is very committed to resolving the circular debt issue and going forward trying to overcome the power deficit. Whether it is actually able to end load shedding by 2009 is obviously I think that's very optimistic. that is very optimistic. I think 1.8% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात की जा रही है, नेगेटिव 7.7% LSM वाज दिस ईयर. तो ये जो प्रेडिक्शन है 1.8% ग्रोथ की, इसको किस तरह रियलिस्टिक आप समझते हैं? क्योंकि ये भी कहा गया है कि इंडस्ट्री ईयर ऑफ इंडस्ट्री रिवाइवल और ये सब चीज़ें की जा रही हैं. हाउ सेटिस्फाइड आर द मैन्युफैक्चरिंग और द इंडस्ट्रियल सेक्टर? I think अगर आप maybe if you talk in the market या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग से, तो maybe they're probably underwhelmed के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने जो इक़दामात दिए हैं. 1.8% का जो टारगेट है, it is not unrealistic. It requires a lot of things to fall into place. Basically, one thing what you'll have to see is कि जी जिन्होंने ठीक है कि टैक्स बेस हमें एक्सपैंड करना है. Right now 60% of your tax revenue comes from the manufacturing sector. ठीक है, तो you have to understand कि already the tax burden on them is very high. Given कि आपने अभी कहा तो 7.7% contraction है, पूरे sector की contraction we're looking at between 3.5 to 4% this year. तो नेक्स्ट ईयर वाई 1.8%, एक तो लो बेस इफेक्ट होगा FY09 का, ठीक है, आपका कंट्रैक्शन हुआ, देन यू कैन सी expansion next year. But one of the key things that even the minister mentioned in its budget speech was that monetary easing will be critical. If the state bank moves with regards to the discount rate, if they ensure the market is liquid, obviously whether the market remains liquid or not, सिर्फ state bank के हाथ में नहीं है, it depends on a lot of other factors also. But whether they can follow an accommodative monetary stance, they start to cut the discount rate जितना aggressively हम लोग चाहते हैं, so then 1.8% I don't think it's unrealistic. सही. अच्छा, आप इससे पहले भी हमारी बात हुई थी, इकोनॉमी पे बात हुई थी, इससे पहला प्रोग्राम में थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कुछ बात की थी, जिसमें टैक्स रिफॉर्म जो थे मेनली टैक्स रिफॉर्म्स पे हमने फोकस किया था इससे पहले प्रोग्राम में, और इकोनॉमी से भी हमारी बात होती है टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर. टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट के मेजर्स इस बजट में रहे, हाउ डू यू सी देम? आर दे इन लाइन विद योर एक्सपेक्टेशंस? अभी जो there are two things when we're looking at कि जो imposition थी taxes की, एक तो थी CGT on real estate, ठीक है, और दूसरी थी कि gross asset tax. Now CGT on real estate has not materialized. उसके अंदर कहा है कि जी हमने CVT हमने डबल कर दिया, ठीक है, from 2 to 4%. मगर CGT हम basically NFC में हम डिस्कस करेंगे because the provinces requested कि we want to discuss this on a provincial level and see whether we want to impose this tax. So I think at this point in time कह सकते हैं it seems unlikely कि CGT actually लगेगा real estate पे. Secondly, gross asset tax. I just want to interrupt you. आपको लगता है कि लगना भी चाहिए इन हालात में जहाँ पे real estate market is इतने ज़्यादा हम volumes भी नहीं देख रहे, और already हुकूमत के लिए actually it can maybe we might even see capital losses gains now. जैसे even अगर equity markets की बात करें, अगर last year लग जाता तो हुकूमत काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाती जिस तरह मार्केट की परफॉर्मेंस रही. तो डू यू थिंक इट एक्चुअली मेक्स सेंस नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम टू इम्पोज दिस टैक्स कि गवर्नमेंट के एक्चुअली रेवेन्यूज जनरेट हो सकते हैं इस तरह? I think obviously there are a lot of, it makes sense in that obviously you would want that every part of your economy should be documented, मगर whether it should be the top priority वो अलग एक डिबेट है. अभी जो उन्होंने जब हमने कहा था कि टैक्स कौन से सेक्टर से करेंगे, तो नंबर 1 was real estate कम करेंगे, फिर सर्विसेज, फिर कैपिटल मार्केट, फिर एग्रीकल्चर. लेकिन जो रियल एस्टेट पे टैक्स था वो CVT को 2 से 4% कर दिया, यानी बर्डन उन पे बढ़ा दिया. टैक्स बेस पे जब बढ़ाने की बात की थी शौकत अली साहब ने, तो कहा था कि नए सेक्टर्स को टैक्स में लाया जाएगा, ये जिन पे टैक्स नहीं है उन टैक्सेस को इम्पोज किया जाएगा. ये तो टैक्स बेस बढ़ाने में हमने उन पे मजीद बर्डन नहीं डाल दिया? हाँ, I mean रियल एस्टेट पे I don't know if it's such a burden, ये तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है, ऑब्वियसली इसके अंदर ज़ाहिर है